फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक का इशू ऑफ करेंसी नोट्स. सेकंड फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट. अब तीन तरीके से सेंट्रल बैंक एक्ट करती है एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर, एज एडवाइजर एंड एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट. सो फर्स्ट ए पार्ट देखेंगे एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एडवाइजर एंड एजेंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फंड्स का कस्टोडियन कौन? कस्टोडियन मतलब उनको सही सलामत हिफाजत से कौन रखता है? गवर्नमेंट फंड्स का कस्टोडियन सेंट्रल बैंक, that is RBI, Reserve Bank of India, in India. So central bank is custodian of government funds. Central bank receives and make payments on behalf of government, that is taxes receive किया और government की employees को salaries दिया. is an example कि government के behalf पे payments receive, that is make payments on behalf of government and take receive payments also. RBI transfers government funds from one place to another. आज महाराष्ट्र में पैसा चाहिए, कल केरला में चाहिए, परसों दिल्ली में चाहिए, राजस्थान में चाहिए, कहीं भी पैसा चाहिए, RBI ट्रांसफर करती है funds from one place to another for the government. It advances self short term loans to the government. गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए, कौन देगा? गवर्नमेंट को लोन, RBI. It provides foreign exchange to government to meet external debt obligations. External organizations होते हैं जिनसे country debt लेती है, so उनको पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? RBI. So it is custodian of government funds. It receives and make payments on behalf of government, then transfers government funds from one place to another. It advances short term loans to government and foreign exchange भी provide करती है. So this is as a banker to the government. We have to still do as an advisor and as an agent in the next video.